Hello, hello. This is the Modified episode number 2810. Today's date is 17 July. Oh. Sorry, 17 July 2023. It's almost like a night at 10:11 p.m. All right. So I was actually thinking about China. What? Thinking about China? Like I'm watching I just watch a vlog of there is a guy named Pratik Jain. He's a travel influencer guy. He went some sort of cities and do some sort of vlogs and tell us the information about and post all those things on YouTube platform. So yeah, so this is the guy. So I watch his videos and while I was watching his videos, uh, he explained things about China. Okay, let me tell you one thing. Why I'm so curious about China? Okay, let me tell you. Ki, we have a digital world. Digital world means like that ki we are connected. Okay, even if I didn't really went to the US, Europe, whatever it is, but still I know the people over there, what is their thinking, and also I understand their personality. Okay, because of the media and the movies and web series and all those things. Okay, but China is kind of like a country which I don't really know because like China is completely different. Okay, I can't I never really know that I haven't seen any kind of like a movie or web series regarding about China or regarding about the like a kind of like a telling the culture, telling their life in China. Like, is it available? But I might not watch those. I never really watched those videos and whatever it is. Okay, so I was not really connected. I didn't really know nothing about China. Okay, there is the only one thing I know about that ki China about ki like what does the government do, like COVID and things like that, and then global times and yeah. But inside their China, the people are so beautiful and yeah, beautiful. Like this word, I'm actually telling you all those things about beautiful. This word is came from this guy named Pratik Jain. He explained things about what is really people over there, and people are so good, nice, respect, funny, everything. Yeah, it's not just kind of like a thing that ki like I don't know, yaar. The image that we have regarding China is not what we think it is. Okay, like we have an image regarding China is about the Chinese government, not about the Chinese people. Okay, when we I like we didn't really connect with the Chinese people. Okay, so when I watch those videos, vlogs, I realized that, na dude, yeah, the Chinese people was so gentlemen. They are kind of like us. Okay, they are not kind of like a something really like which is they are so ground to earth. They are, and their culture, their things are way much different than. Okay, let me tell you one thing. Okay, have you seen an influencer? Yeah, everyone's seen influencer. Okay, I didn't really see influencer in real life, but I know this is the influencer. Okay, so how does influencer, can you see, like, can you create the image inside your mind? So Malaika Arora, okay, influencer, Instagram influencer. So what is the image that I'm creating? So actually she was coming from gym, and she came from gym and she's actually she's going towards the car and she sit on the car. Okay, so and a bunch of paparazzi or bunch of photographer are taking some sort of photos, so that means it is influencer, right? Okay, so this is kind of like something really big influencer, no? Like Malaika Arora is a big influencer. Okay, let's talk about something really small influencer. Okay, so does people know some might be influencer taking photos or taking some sort of vlog? Okay, but not that much. Like the in Indian people now, they are not really
the perspective is not really good. But when you went to the China, the influencer are doing on live performance on the street, and they are not just like, I don't know yaar. I just don't really know how to explain this thing. Like, there is a kind of like a copra where that bunch of people was there, okay, and all those people are influencer means like they don't really have any Instagram, Facebook, but they have something over app like Instagram or Facebook, okay, kind of like a replacement of that, okay. And it's only available in China. So those people, the people are on that corner, they are doing singing live, and and singing live, okay, like basically na, like what kind of image that you created, like if I say this person is singing live, so what is exactly image that you created inside of your mind, that he is actually at somewhere, maybe at place, or like if he has some sort of budget, so maybe he went to the orchestra or concert maybe. But if he doesn't have any budget or anything, so he's at home, okay, and he was at home and he was doing live, okay, no one around him, okay. But there is a guy, not just one guy, there is a multiple of guy singing live on their social media app, okay, in public place, okay. एंड डूड यार, मैं पागल ऐसा हो गया ना कि लाइक दे आर लाइक, आप लाइक हो गए, और चारों के चारों लोग ने ऐसा गिम्बल मोबाइल पकड़ के ऐसा वो गा रहे हैं, लाइक व्हाट द फक, ये क्या चीज है यार, like I don't know how do you concentrate, like basically ना, like singing is a kind of like a creativity stuff, okay. अगर creativity या creation all those things, okay, यहाँ पे आपको पूरा फोकस रह के काम करना पड़ता है, पब्लिक प्लेस पे आप ऐसे कर ही नहीं सकते ना, ओके। और पब्लिक प्लेस पे गाना गाना हो तो ऑब्वियसली यार ठीक है गा सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू गा नहीं सकते, ऑब्वियसली गा सकते हैं, बट लोगों से छुप के आप गा रहे हो, ओके, लोगों से छुप के, लाइक देयर इज अ गाय हु इज एक्चुअली सिंगिंग, इज लाइक उसका माइक ना बिल्कुल उसके मुंह के पास है, एंड देयर इज अ मोबाइल स्क्रीन इज जस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिज फेस, ओके, बस इतना सा, ओके। और उसकी उस स्क्रीन में बस उसकी शक्ल दिख रही है, नथिंग रियली एट ऑल, ओके। और और उसके वो लाइव में करीब 15,000 लोग थे। I was like, what the fuck? And dude, and this is not just one corner. There are उस वैली में या जो उस गली में थे ना, everyone is influencer and everyone is singing, everyone is, I don't know यार what does they are doing, but like most of the people are singing. Okay, there is a Chinese some sort of thing, they are singing, okay. And like, पिंचो ये क्या है यार, ये क्या है, I never really seen such thing, like okay there is a guy who is actually dancing or there is a guy who is actually recording, okay चलो मान लेते हैं कि वो रिकॉर्ड कर रहा है या लाइव कर रहा है, चलो ठीक है, it's good, it's great, it's a they have something really, but I don't know, मेरे को समझ ही नहीं आता है, और when I see that thing ना, वो उनका सेटअप ना कितना अजीब है यार, like okay, like let me tell you one thing, okay, there is a girl who is actually influencer, उसका सेटअप दिखा था मैं, ओके, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, इंस्टेड ऑफ लाइक वी हैव काइंड ऑफ लाइक अ सेल्फी स्टिक, ओके, सेल्फी स्टिक में क्या होता है कि आपके सेल्फी स्टिक के अदर एंड में मोबाइल रहता है, एंड आप व्लॉग कर रहे हो और व्हाटएवर इट इज, ओके, सो दिस इज द सेटअप, ओके, दिस इज द सेटअप, अ नॉर्मल सेटअप, ओके, दैट वी कैन इमेजिन। बट चाइना में यहाँ पे सेल्फी स्टिक इज काइंड ऑफ लाइक अ ट्राइपॉड लेके घूम रहे हो, सो बिग, इतना बड़ा कि आई डोंट नो, ओके, लाइक सुपर बिग, ऑलमोस्ट लाइक करीब 1 या 2 फीट तो नक्की होगा वो, इतना बड़ा तो होगा, ओके, 2 फीट तो नक्की होगा वो, ओके, 2 फीट, एंड देन उसके अदर एंड पे मोबाइल लगा हुआ है, वहाँ पे फ्लैश भी लगा है, या दे हैव फ्लैश, ओके, मोबाइल के ऊपर एक फ्लैश भी लगा हुआ है, ओके, वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, ओके, अभी फिर वहाँ से वायर कनेक्शन आता है ऑडियो के लिए, ओके,
और वो ऑडियो का कनेक्शन उसका हेडफोन से वो सीधा उसके मुंह के पास, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल कट टू कट। ओके, वो माइक है ना बिल्कुल क्लोज टू हर माउथ। ओके, और फिर एक मोबाइल बिल्कुल उसी सेल्फी स्टिक पे कनेक्टेड है। ओके, बिल्कुल ऐसी लाइक काइंड ऑफ लाइक अ रियली क्लोज, नॉट दैट फार बट क्लोज। वहाँ पे लिरिक्स चल रहे हैं एंड शी वॉज गर्ल, वो लिरिक्स देख के वो मोबाइल में लाइव परफॉर्मेंस कर रही है ऑन अ सेल्फी स्टिक ऑन अ पब्लिक प्लेस। बेंचो तुम पागल हो? ये क्या नशा है बेंचो, ये क्या है लोडू, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। ये आई डोंट नो यार लाइक। और वहाँ पे इन्फ्लुएंसर ना, दे आर ओनली डूइंग वन थिंग, सिंगिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग सिंगिंग एंड dancing I haven't seen that much, but singing are most of the people are doing singing, most of the people are doing singing। डूड यार ये क्या पिंचो अजीब ही रहा है यार, लेजिट ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। बट like okay, let me tell you one thing now. If you haven't really understand thing na, like I'm not judging, okay, I am not judging anything, okay, obviously I am not a kind of like a person who is actually kind of like a judging things, no, literally not, but it's kind of like a something really different than I used to see। So I don't know dude। ओके, हमारे इंडिया में अगर कहीं से बंदा व्लॉग भी कर रहा है ना भाई, उसको बहुत ही ज़्यादा नहीं का ये चाहिए, कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। ओके, क्योंकि इंडिया में व्लॉग करना वेंचो बहुत ही डिफिकल्ट है, लिजिट डिफिकल्ट। लाइक बेसिकली आप ऐसे फ़ोन करके ऐसे करके बात करके जाओ। ओके, जस्ट गो, ओके, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। ओके ओके, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि आप ऐसे किसी मार्केट में बस ऐसे मोबाइल हाथ में लेके बस व्लॉगिंग करते हो जवान से, हेलो गाइस कैसे हो। इट इज़ लाइक इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गट्स चाहिए यार इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज पीपल नेवरली डज सच थिंग। लाइक या इंडिया में ऐसे लोग नहीं है जो ऐसे व्लॉग वगैरह करते, बहुत ही कम लोग हैं। वो जो भी लोग है ना, दे आर डूइंग व्लॉग काफ़ी लाइक थोड़ा सा लाइक दे हैव काइंड ऑफ लाइक समथिंग लिजिट कॉन्फिडेंस दे कैन डू ऑन द पब्लिक, तो हाँ वहाँ पे कर दे। बट डूड यार बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए आपके इसमें ताकि आप व्लॉग करो पब्लिक के बीच में। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, नॉट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, बट चाइना में ये चीज़ इतनी कॉमन है डूड। पिंचो अगर वो सेटअप ना मैं हाथ में लेके भी ऐसा घूमूं ना, मेरे को लाइक आई जस्ट फील रियली एम्बैरस। ओके, क्योंकि वहाँ पे इतना उसके उसके मोबाइल के ऊपर इतना बड़ा फ्लैश था ना, इट्स अ हैलोजन। ओके, और वो लाइट मोबाइल उसका सेटअप पूरा हाथ में, वो ट्राइपॉड उसका पूरा हाथ में था। मैं पागल। पहले तो समझ भी नहीं है कि ये क्या है। ओके, फिर बाद में समझ में आया, ओ माय गॉड। और उसके जो लाइव सिंगिंग में यानी हाउ मेनी पीपल आर लाइव, लाइक हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग द लाइव फीड, ऑलमोस्ट लाइक 15,000 पीपल आर वॉचिंग। एपिक यार, एपिक। ओके, like China is kind of like a something really different than we imagined, different than we thought. It's just like something really another world। Okay, yeah, the people are exactly like people are like a kind of like a same, they have two legs, two hands, that's it, but the things are different। Okay, also is that ki when you see from a US person perspective, like as a US person came to the India, as a US person, he's also literally thinking about that ki it's something really another different world, legit different world, the trains and peoples and things like that। I don't know yaar, but why am I talking about this thing in Artifact episode? I don't know yaar, like I just wanted to explain things about that, so yeah, like I will definitely go to the China यार, मेरे को चाइना में जाना है। I just wanted to see the China, like China यार, yeah, this is like dude yaar, epic। I definitely want to go to China। All right, so
today I record my gameplay. I haven't really edited. After the artifact episode, I won't be able to edit because I don't know. अभी तो मन ही नहीं कर रहा आज लाइक जस्ट नॉट ओके. कल सुबह मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँगा. ओके. Right now I was starting imagining things about the China and things like that, and I am really hooked up about this Chinese thing, and I just wanted to know about more and more. All right, so this is the end. भाई मेरा पेट इतना, भाई मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है यार. कल दोपहर को भी खाना खाया, शाम को भी बहुत ज़ोरदार खाना खाया, आज सुबह और रात को भी. या आई एम डूइंग एक्सरसाइज बट स्टिल मेरा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंस्टेड ऑफ रिडक्शन. मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा खाना. ऑलराइट, सो दिस इज एंड थैंक यू.